Hello and welcome to Arduino Awareness. Thank you for taking your time and being here with us today. This is the first of a society, and these webinars are organized under the Student Startup and Innovation Cell GC Modasa, so namely SSIP Modasa. So in today's session, we will try to cover some of the basics of Arduino community, how we can work with it. Okay, so without wasting much of the time, I think we should get back and get going with our workshop, right? So bear with me till I share the screen. Before we proceed further, I would like to verify with any of the viewers if the audio is sorry, if the audio is clearly audible. You can chat, reply in the chat window if it is, if anyone is available, please. Okay. Yeah. So I see one of the participants has said yes, I'm clear of the time. Let's dive into our workshop. So as I've told you, this will be an hands-on workshop, of course, with the time limitation. I won't be able to cover many of the aspects, but I'll try to cover as much as I can, and also I'll give you a demo of couple of basic demonstrations with the help of Arduino, right? So let us first understand what is the idea behind the Arduino, right? So basically, Arduino is an open source physical computing platform designed to make experience with uh, at the Interaction Design Institute of Ivera, that is at Italy, in earlier 2000. So they were developing a platform which can be used by the normal people. So obviously, those who come from engineering background will obviously are pro when it comes to the electronics and such platforms. But what about the normal people? So they were developing such a prototype, and then there were other group of people whose thesis project was to make a visual art programming language, so as to like you can clearly see what is going on at the back end while you are doing that sort of programming. And also the idea was to make sure that programming is understandable by everyone. ठीक है? ठीक है? Uh, so now moving further, let us see what were the ideas. So first of all, when I said that Arduino is an open source physical platform, so what is open source? So open source basically simply means that collaborative sharing. So each and everyone is aware with the ongoing research and the resources, and they contributed. So you see this way, na? This Arduino were launched in around 2005, and all the communities were developed then after, especially Arduino community, if we say precisely. Then you say that from 2005 onwards, almost everybody, that includes pro members, that includes intermediate members, that includes let's say a DIY specialist also, and everybody has contributed to this community. And you see that now Arduino itself has a really good base. So that is the advantage of open source. So basically, what they do, whatever the technology or the IP that they have, they make it available to everyone. Now the next is it's a physical computing. So what is physical computing? Physical computing is nothing but interactive system that can sense and respond to the world around them. So basically,
which is smart and which is reacting to the world around us, is nothing but a physical computing. In a broader sense, you say you have a sensors, and then you send something, and then you have actuators based on whatever sensing that you have activated. Now, moving further, electronics. The idea behind Arduino is to make electronics more fun and intuitive. So, like electronics have been with us for about I would say 30-40 years. But then again, you usually see that we are always at the receiving end. So we are actually procuring electronic equipment and we are using it, but we rarely get to do our hands-on. So that was again the idea behind launching the Arduino. So now moving further, we will see that what is Arduino and its related environments, right? So everybody knows about Apple environment, right? So when we have Apple device and Apple laptop, what they call it, and then we have Apple phone. So they are when they are connected to through an internet in a system. So we call it an what I can say Apple environment. So similarly, when we are working with Arduino, we are using or making use of what we call is an Arduino environment. So let us understand what is Arduino environment. So first and foremost thing that what we talk about Arduino, this device itself is nothing but a core member of an extended environment. So what are these extended environment? So we'll quickly see. See, first and foremost thing that you require, of course, a printed circuit board, which is Arduino. In this case, Arduino Uno R3 or whatever version that you might be using. And these printed circuit boards are nothing but they are made so that you can use particular microcontroller or processor and make what I can say interactive system throughout it. So once again, if we recall, this is a physical computing system, right? Now, moving further, to code or rather say program this particular board, you require an ID. So ID is nothing but a platform or software kind of software sort of stuff where you program something and whatever thing that you have programmed, you dump it onto the this printed circuit board. In our case, Arduino. Right now, of course, you'll require certain library. Now, those who have some sort of experience with embedded system would know that at times and again you require libraries to be used. Now, this library contains some sort of information which actually is sort of programming. So I'm not going to get into deep with what these libraries and data types constants are all about. I'm sure that most of the people are aware of Arduino. I'm just trying to cover what are the ideas behind this entire community. So now we have covered boards, then we have IDE, and then we have code or library. These libraries are provided by this Arduino.cc, and then of course people from all over the world even have started contributing for the database of these libraries. Right now, moving further, we require components. Now, what are these components? Of course, I say that in the physical you require some certain sensors. So when we talk about sensors, sensors are nothing but basically are used to sense certain physical variations, right? Which soon see. Actually, I'm not going to cover all the sensors and rest of the stuff because a lot many informations are already available on the internet. So that will save a lot of our time. And then this is what I am talking about, third party libraries. So when we purchase an Arduino, you install certain drivers and software, you let's say download its IDE from its official website, then already it comes with pre-installed libraries. But then if you want to make certain specific prototype, then you require specific libraries. You know, these libraries make you work less hassle. So, in order to do that, many of the world
enthusiasts or even professionals have contributed. And now Arduino probably has largest third-party library available as compared to any of the printed circuit boards, because in no time it has become so popular among the world, right? So I hope that up till this point everybody is getting what we are discussing. Right now, the final component with the Arduino environments are shields. Now, what are these shields? So we already know that we have this sort of Arduino boards. Now, obviously, we want to make use of certain extended, what I would say, now, sometimes it is easier to connect this sort of shields and make sure that when they are connected to this Arduino boards, it works in a specific manner, or it gets certain specific work. So obviously, um, now moving further, let us discuss. So these are the, as I was saying, these are the Arduino environment where you have board, then you have IDE, then you have libraries, then you have components, then you probably require third-party libraries. Third-party libraries are not always, they are not mandatory, but given to the nature of specific needs, sometimes you need to have these third-party libraries also. Then, of course, shields. Shields are also not mandatory. If you are designing a simplest of possible, let's say, uh, application, then you might not necessarily need a shield. But when you go for a complex prototyping, then obviously you require uh, this sort of shield. Now, let us see that as I have said that this Arduino was launched prior to 2006 or 7, and you say that it has been only around 16, 15 years, and it is so popular. In fact, so popular that in fact now bigger companies are actually those who are in prototyping are using this to develop their prototype and test their prototype even before they go to mass production. So obviously there are certain features why it has become so popular. And see, companies were already using embedded system, but more importantly, this Arduino has become more popular with the common people. And even nowadays, the students prefer this printed circuit board as compared to anything. So why is it so? So it has certain advantage, like it is first and foremost as compared to other boards, it's inexpensive. Then it supports cross platform. So if we talk about that IDE can be installed into Windows as well as some other operating systems, right? So the cross platform availability is a big boost by for making this community more popular, or rather say Arduino. Then it is easy to use hardware and software. If we say someone who has not any, or rather say someone who is not pro at using this sort of printed circuit boards, or even for that matter finds difficulty using the software, even he or she can work with this Arduino without any hassle. And then the other important aspects are that its programming. Its programming is simple. It has only one main declaration portion and then only one loop. So its programming is simple, and it's a clear environmental programming, environment programming. So clear programming means anyone who is not pro will be able to understand. And probably other important feature is this being open source. So we receive support throughout the world, right? So considering all this aspect, that is why they became so popular in no time. Okay. So when we talk about Arduino family itself, so I would say that there are various layers of Arduino family also. So first, I would say that we have entry level products, then we have advanced level products, and then we have IoT level. So when we talk about Arduino Uno, let's say Pro Mini, or for that matter, Mini Pad and sort of Arduino, we'll see that in some time. They are entry level products. And when we talk about advanced level products, are something that Arduino Mega, you say that, then IoT versions, we see that those are nothing but advanced level product. In fact, now considering the fact that IoT will be a big change in coming few years,
these people have specifically provided IoT covers and even services, right? So in future workshop we'll try to cover that also. Probably will not cover at this point at this time because I want to keep it simple so that everybody understands basically what we are doing. Like when we talk about Arduino, everybody understands it. It seems like almost each and every engineering student have at some point worked with it, but they hardly care about to get an understanding actually what it is, right? So that is okay. By discussing all those stuff. So let us talk about what are the entry level products. So you say these are the entry level products. Now what are they? So as I was told you, Uno, Nano, Pro Mini, Lilipad, Mega. I think Mega can be taken to secondary or intermediate level. But in a broader sense, these are what is available. Okay. So now let's talk about Uno. So everybody understands the concept of digital and analog. So we have 14 digital IO pins and 6 analog inputs. It provides USB connection, and almost each and every laptop and PC they come up with this USB port. So it makes simple or more understanding of connecting them together, right? Then we talk about Mega. So that is probably the largest Arduino family members in terms of available pins. So of course there are 54 digital pins available and 60 analog input IP are also available, right? So this analog input usually takes care of all the what I think is sensors that provide the analog data, whereas in terms of some digital data, we have 54 various uh, with us, right? So moving further, we have Arduino Nano. Now it is powerful and small. See, this Uno and Mega are larger printed circuit board, and there are applications where you require only minimum pins and what I can say sizes. So in this case, this Nano and Pro Mini might be useful. So they only have 14 to 6 digital I/O pins and 8 analog inputs. And of course, it comes with mini USB port, so that you need to take into the consideration, especially if you are using that nano. And Pro Mini is one again. It's a smaller, I would say, size Arduino. It is not available. I might show you at some point of time. Right. Now, moving further, lily pads. Lily pads are they are specifically developed for making wearables or e-textile. You must have heard about this smart t-shirts and smart wearables. So if I want to take a prototype map, it's so much hassle to make programming using this sort of big printed circuit board and then to mount it on your hand and somewhere and test your prototype. So to make it simple, they have developed these lily pads. I think lily pads and probably other products might not be available right now because they have stopped the support, or like rather, so they were not like initially they were popular, then there were other variants available, so people might have opted to that, and they are not kind of right now fully available. Right. Now let us talk about what are the enhanced level family members. So these are the enhanced level or IoT bundle that I was talking about. Arduino MKR0 that we can take MKR Wi-Fi 100, 1000 and MKR Wi-Fi 10. So these are IoT bundles specifically designed for IoT products, right? They come with why they are called advanced level family members because previous Arduinos came with AVR. So AVR is somewhat what I can say intermediate level microcontroller, whereas this printed circuit board, this
IoT bundle. They come with SMB21 Cortex 32-bit. So of course, ARM is an advanced RISC machine, so it offers much more functionality. And also the advantage with this printed circuit board is as compared to Uno, they come with a smaller footprint. And of course, power saving is a key concern when it comes to IoT application. That's why they have specifically designed this IoT boards, and of course they provide some sort of encryption, right? Like when we talk about Maker Zero, so it comes with that the left one, it comes with the SD card holder, so you can easily play audio with certain features. Now, one thing that I was talking about that now Arduino have started providing IoT support. So if you go into the Arduino.cc, their official website, and then you create your login ID and account, then what I would say that you can use their cloud services. So that what you have to do, you need to log into, you need to create your login into their website, and then after you go to their cloud services and you can use services. Of course, for level 6 for free, so that will offer minimum functionality, but at least you'll get to know and have an actual hands-on on what is IoT systems are all about. Right? Now, let us dive into some more specific matters. As I've told you before the start of this webinar, that we're going to have a hands-on. So, for hands-on purposes, I'm going to make use of Arduino Uno. This is probably the most popular Arduino family member. What are some of the here what I can say important points when it comes to understanding this Arduino Uno. Of course, if I go into the depth and explain everything, it will consume a lot of time, and that is something that I deliberately want to cover. Right? So we'll understand what are Arduino Uno. So as I told you that this Uno is based on 8 mega 32. So when we talk about this in some other sort of let's say available Uno, you'll see a large chip over here. Over here it is shown smaller chip, right? So that is nothing but your 8 mega 32 microcontroller, right? So whatever you program using this board to this particular 8 mega 320, right? Now moving further, we have 14 digital IO pins available and 6 PWM pins are available. So we understand that digital pins are already available. IO analog pins are available, but what if we want to send something analog output? For that, we need to make use of PWM. So once again, I'm not going to explain all this stuff, but this PW, 6 PWM pins are used when we want to output something which is of analog nature. So of course, that is not an analog, but we can have nearest approximation of that sort of analog natures, right? Now, as I was saying, it has 6 analog input. It comes with 16 megahertz crystal. So usually, when we go to buy, let's say laptop or PC, that this megahertz or gigahertz are always higher. So crystal frequency that comes with it has 16 megahertz, so which is relatively higher, especially when we are talking about making a simple project or stuff. And also it comes with USB connections. So your regular PCs, your laptop, you can use that. Okay, issue. So let us discuss about 8 mega 33. It's a 28 pin BIP package. So if you don't get it right now, no need to worry. Just make sure that you understand that this Uno comes with this sort of 8 mega 330 28 IC installed on the that particular printed circuit board. So all the features that I have shown are once again will be replicated over.
So what are I specifically get this image only to make you aware about that 8 mega 328. So what can you do? See, if you don't want to make use of this entire printed circuit board and you only want to use it for the sake of programming, even that you can do. So you simply connect your USB with your Arduino board, you program that particular controller, and then you take out that particular controller. Of course, if you have this sort of onboard connected component that you cannot take out, but when it is available with this sort of function, I think this is the most commonly available in our market. Then you can take out that particular controller, you mount onto a certain GPB, or for that matter this sort of what I say breadboards, and then you connect your crystals, you connect your crystal and all the peripherals, you provide supply, and then you can make use of it, right? So especially for the students, those who want to use this Arduino for the final year project, this is a cheat code that you do this sort of stuff, and then you take out this controller, you mount onto certain other let's say PCB which might be made by you, or this sort of breadboard, and that's it. That's a wonder. जो यहाँ पे आपने किया वही आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है. आपको क्या कनेक्ट करना है? You only have to connect your crystal, capacitor, probably restart switch and power supply. Right? So let's talk about a little bit about the shield. So what are the available shields and rest of the stuff? So as I think shields I have shown you already. So this is a regular Arduino. What you take this sort of shield, you connect it onto your Arduino, and it enables you to do certain specific stuff. Like over here, I have kept certain shield. So if you see that for first shield, so it can be used to connect various type of motors such as servo motors or DC motor and stepper motor sort of stuff. If you want to connect, let's say LEDs, LED boards, and with certain other functionality and feature, then you can have that sort of shields also. Over here, they have even connected four relay board shield also. So basically, what you do, you simply take that shield, mount onto it, you download certain libraries which will enable you to make use of this shield, and you are done. You are ready to go. Right? Now let us talk a little bit about available electronic components. So now I think whatever amount of information that I have given, I think that was understandable. Like you are getting it what I am trying to convey. Right now, as I have said previously, that we are going to take a couple of hands-on. So for that, let us understand what are the components. Once again, all the informations are available. I am just kind of putting these all things together. So if you have any queries, you can go to internet and you can search. You'll get tons of information, right? So moving further, let us just say uh, uh, these are the components that you might use. So you should know about what are the resistors, then LDRs are there, ultrasonic sensors, distance sensors that we are going to use. LCDs are most common, like this is crystal LCD 16 cross 2. Then push switch is also used, right? So I believe that those who have reached to like third semester or fifth semester will already understand all these concepts. So I'm not going to cover each and every component in depth. So let us move to quick starters, right? Uh, Before we go further, let us look into a little bit about Arduino programming, right? So it is the most sort of common stuff that whenever most of the time students come that sir हमने program download किया था, हमने Arduino में लोड भी किया था, वो लोड भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा Arduino काम नहीं कर रहा है. So that is because someone else has done some sort of programming. You have taken that sort of programming. आपने वो programming लेके यहाँ पे सीधे इसको डंप कर दिया, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दैट प्रोग्रामिंग विल डू वर्क फॉर यू जो आपको करवाना है. तो ऑफकोर्स वो नहीं होगा. तो इसके लिए क्या होता है दैट स्टूडेंट्स डायरेक्टली डाउनलोड दैट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम और स्केच जो हम उसको बोलते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग इट. सो मैं ज़्यादा तो पूरा प्रोग्रामिंग कवर नहीं कर पाऊंगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड आर्डिनो प्रोग्रामिंग. तो पहला तो लेते हैं
एज आई सेड दैट द प्रोग्राम्स जो उसको बोला जाता है स्केच। तो यू सी दैट व्हेनेवर यू वांट टू आप कुछ भी आईडी के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे तो सबसे पहले एक स्केच खुलेगा और वो स्केच जो भी खुलता है आईडी उसके अंदर जो भी प्रोग्राम होता है वो एक स्केच के नाम से सेव होगा। एंड और अगेन दी कॉमन प्रैक्टिस जो हम करते हैं कि जो भी होगा उसको सीधा जैसा भी सेव ऑप्शन आ रहा है उसको उस तरीके से सेव कर रहे हैं। बट द आइडियल प्रैक्टिस वुड बी आप उसको कोई स्पेसिफिक नाम दें। सो इन फ्यूचर व्हेनेवर यू आर रिट्राइविंग दैट स्केच तो आपको पता चलेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड सर्टेन कमेंट्स ऑल्सो। तो आर्डिनो के अंदर हर एक स्टेटमेंट के पीछे एक सेमीकोलन आएगा। So that you need to remember, मतलब each and every statement will end with a semicolon, right? Now, if you move further when it comes to double backlash or backlash and star, तो उससे क्या हो सकता है कि you can provide certain comments. So मतलब why? मतलब आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम खुद से बनाया है तो you provide some comments. So in future referencing के लिए whenever you uh, see that particular sketch in the future you will understand कि हाँ ये प्रोग्रामिंग मैंने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए या फिर ये पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए किया था। राइट नाउ दूसरी एक दो चीज़ है कि ग्रुपिंग के लिए विल यूज कर्ली ब्रैकेट एंड बाकी फंक्शंस के लिए जो हमारे रेडीमेड ब्रैकेट हैं हम वही यूज़ करेंगे। एंड जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि बिफोर वी गो इनटू द अदर एस्पेक्ट हमने ऑलरेडी प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी को यूज़ करा हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है दोनों ही का फंक्शन का और फिर ग्रुपिंग का। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव कॉल्ड अ व्हाइल लूप फंक्शन तो जो कि टाइम एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा। एंड देन वी हैव कर्ली ब्रैकेट और वहाँ उसके अंदर तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दो स्टेटमेंट। तो वो दो स्टेटमेंट का ग्रुपिंग कहाँ पे हुआ तो कि जो व्हाइल लूप फंक्शन है उसके अंदर। और जैसे कि मैंने बताया है दिस फंक्शंस आर डेवलप्ड बाय somebody else जिसका आप readily यूज कर सकते हो। ठीक है। Now without going into much of the depth of what are functions void क्या indicate करता है मतलब it's not returning anything। So of course आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो पता ही है। Now जैसा कि मैंने बताया कि you take any particular Arduino प्रोग्रामिंग तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर तीन ही चीज़ें होगी। एक होगा डिक्लेरेशन पार्ट एक होगा सेटअप पार्ट और एक होगा लूप पार्ट। सो योर डिक्लेरेशन एंड सेटअप विल बी रन ओनली वंस। जब भी आप कोई भी आपका आईडी का कोड ओपन करोगे तो उसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें होंगी। तो सेटअप के ऊपर आप जो भी कॉन्स्टेंट्स है वेरिएबल्स है उसको आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है। जो भी लाइब्रेरीज आपको कॉल करनी है वो भी आप सेटअप से पहले उसको कॉल करते हैं। ठीक है। सो सेटअप के बाद सेटअप के अंदर क्या होता है कि एवरी टाइम आप रीसेट करोगे तो सबसे पहले वो रन होगा और जैसे भी आप कोड को इसके अंदर डंप करोगे तो दैट विल अगेन बी राइट फर्स्ट वो सबसे पहला लिखा जाएगा। ठीक है। सेटअप के बाद सो सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे तो जितनी भी पिन्स है उसको हम इनपुट या आउटपुट की तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो और फिर जो भी मतलब हमने फंक्शंस करना यूज़ करना है तो शायद मे बी पॉसिबल कि उसके बॉर्डर्स वगैरह आपको सेट करने हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पे करोगे तो इन योर सेटअप। सो वंस इट इज सेटअप उसके बाद आपका आर्डिनो रेडी है देन इट गोज इनटू द लूप। ठीक है। देन इट गोज इनटू द लूप। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि सेटअप और लूप ये दोनों फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन के अंदर जो भी डिटेल्स है उसका ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है। और मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट मेक जो हमेशा बोलता है कि सर ये कोड नहीं रन हो रहा है यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। हाँ ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि वो नीचे जो भी एरर आती है वो सीधी कॉपी पेस्ट करके लिंक पे डाल देते हैं देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। बट आई थिंक एज एन इंजीनियर ठीक है इट इज़ लाइक इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन एज एन इंजीनियर यू शुड डाइव इनटू एंड सी कि वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो बहुत से लोग ये चीज़ें करते हैं सेटअप के अंदर उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ वगैरह को सेटअप नहीं करा होता है। रेडीमेड जो भी फंक्शन या फिर जो भी स्केच डाउनलोड करके आप डंप करना चाहते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कोई अलग वेरिएबल दिया हुआ होता है। लूप के अंदर आप खुद से चेंज करते हो तो वो वेरिएबल कोई अलग होता है देन यू माइट नॉट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है। तो लूप की जो है जैसे कि मैंने बोला इट रन्स ओवर एंड ओवर
एंड ये इट रन्स आफ्टर दी सेटअप। तो सेटअप एक बार ही रन होगा, एक बार रन होने के बाद आपको वापस से लूप के अंदर चला जाएगा। तो समटाइम्स यू सी दैट आपका आर्डिनो कहीं पे स्टक हो रहा है, सो इट कम्स विथ ऑनबोर्ड स्विच, तो आप रीसेट करके देखो, उसके बाद भी अगर वो स्टक हो रहा है, सो दैट मीन्स प्रोग्रामिंग में कहीं पे आपने कोई ना कोई एरर कर दी, राइट। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर ये फिजिकल आर्डिनो है, तो वो कैसा दिखता है उसके लिए आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लो। लाइक इट कम्स विथ पावर इनपुट, so if you don't want to connect it using USB, of course USB will be used to connect, मतलब आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा जब प्रोग्रामिंग डालना है। लेकिन उसके बाद अगर आपको कहीं पे अलग से ये सेटअप लगाना है, देन यू कैन प्रोवाइड योर एक्सटर्नल सपोर्ट वाया दिस थिंग, पावर इनपुट जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन इट कम्स विथ I2C बस ऑल्सो, डिजिटल पिंस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने राइट हैंड साइड पे दी हुई है। ज़्यादातर केस में मोस्ट ऑफ द आर्डिनो कम्स विथ जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। एंड देन वी हैव पावर इनपुट्स, मतलब जो भी हमारा सेंसर्स या फिर एक्चुएटर्स हैं, वो ये पावर, उसको पावर देने के लिए हम यहाँ से ऑनबोर्ड पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव एनालॉग इनपुट्स ऑल्सो, जहाँ से आप एनालॉग इनपुट दे सकते हो। नाउ व्हाई वी कैन वर्क विथ एनालॉग इनपुट, बिकॉज मैंने जैसे भी बताया कि दिस 8 मेगा 328 दैट कम्स विथ A2D पिंस ऑल्सो, तो वही उसी का हम डायरेक्टली यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। और नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड सी सम ऑफ द कंपोनेंट्स। आई एम नॉट गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। जंपर वायर्स आपको चाहिए होगा। अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू लेट्स से एक्चुअल हैंड्स ऑन सेशन। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम समझाऊंगा एंड देन वी डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस हैंड्स ऑन सेशंस। उसके बाद वो जंपर वायर्स आपको चाहिए होगा, आपको एलईडीज वगैरह चाहिए होगी। देखो एलईडीज आर नॉट नेसेसरी, बट व्हाई दे आर रिक्वायर्ड इज बिकॉज आपको जो भी चीज़ें समझनी है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन एलईडी, वो लाइटिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप समझोगे कि हाँ ये चालू है बंद है, तो इट इज इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। 330 ओम का रेजिस्टर आपको चाहिए होगा, 10 किलो ओम का रेजिस्टर चाहिए होगा। 330 ओम जो रेजिस्टर है वो हम एलईडी को साथ यूज़ करेंगे उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वाई 330 या 200 से लेके मतलब 330 ओम तक के कोई भी रेजिस्टर चलेगा। वो क्यों चलेंगे, तो सिंपल V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू मतलब जो भी V बाय आर है, वो करंट से एलईडी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर एलईडी यू रिक्वायर सर्टेन स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ रेजिस्टर, नॉट द स्पेसिफिक नंबर, उसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। आई नीड टू से नंबर्स, right? Then of course you will be requiring this sort of potentiometers, photoresistor, piezo element आपको कहीं पे चाहिए होगा, right? ऑल मतलब उसकी पोटेंशियोमीटर क्या है, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर है। पीजो एलिमेंट क्या है, तो सिंपल हमारा बजर है। एलडीआर किस लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट लाइट। फिर वी मूव फर्दर, मतलब हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, डीसी मोटर्स हो सकती है, ट्रांजिस्टर या फिर पुश बटन हो सकता है। So these are some of the basic components which are needed if you want to get started with the Arduino। तो बेसिक उसका समझना है तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। बहुत से सप्लायर्स दे प्रोवाइड यू विथ ऑल दिस कंपोनेंट्स, मतलब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इंडिविजुअल आर्डिनो और फिर उसके ये कंपोनेंट आपको परचेज करना है, यू कैन गो विथ दिस एंटायर पैक। तो मतलब वो सारा का सारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी पहला मैं यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो बताऊंगा, वो है मेकिंग इनबिल्ट एलईडी। तो यहाँ पे मैं उसका एक्चुअल फिजिकल डेमो नहीं दे रहा, बिकॉज आई बिलीव कि जिन्होंने भी कभी भी आर्डिनो के साथ काम किया होगा, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी ट्राई, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट, राइट। सो मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से हम उसको एक बार समझेंगे, नॉट फ्रॉम दी हार्डवेयर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब दूसरा जब आगे जाते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये दिस इज योर एक्चुअल आईडी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से बटन्स वगैरह दिए होते हैं, तो वेरीफाई होता है, अपलोड होता है। वेरीफाई किस लिए, तो कि आपको कंपाइल या फिर टेस्टिंग करना होता है कि जो भी कोड आपने लिखा है इज इट करेक्ट और नॉट। अपलोड आप सीधा वो जो उसके साथ अपना आर्डिनो कनेक्ट करा होता है उसको आपको वहाँ पे देना होता है। देन वी हैव न्यू टैब ऑप्शन एंड देन ओपन सेव वगैरह क्या होगा। नाउ बेस्ड ऑन मतलब ये शायद पुराना आईडी है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बट रेस्ट ऑफ द स्टफ विल ऑलवेज बी देयर।
अब लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने मतलब प्रॉपरली अपना सारा आईडी सेटअप कर दिया है, तो जब भी आप स्केच ओपन करोगे तो स्केच के कॉर्नर में यहाँ पे कहीं आपको अपना board और serial port दिख जाए। तो why it is necessary to look into board and serial port, क्योंकि जब भी आप पहली बार मतलब आज मैंने पहली बार अगर आर्डिनो कनेक्ट करा है तो इट माइट नॉट डिटेक्ट द बोर्ड, तो आपको क्या मैन्युअली जाके वो बोर्ड और सीरियल पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा टूल्स के अंदर से। देन वी हैव दिस कंसोल, तो ये कंसोल के अंदर क्या होगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल देन वो डन अपलोडिंग वगैरह का कोई मैसेज आएगा, या तो फिर इन केस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एरर वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन सी जगह पे कौन सी एरर आपने शायद करी है। ठीक है, नाउ पहले किस तरीके से करना है, तो फिर अब एलईडी ब्लिंकिंग का अगर प्रोग्राम भी मेरे को करना है तो फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट के आपका जो आर्डिनो है वो हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह से कनेक्टेड है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, वेट फॉर सम टाइम, अगर आप पहली बार इसको कनेक्ट कर रहे हो, प्रिफरेबली यू शुड कनेक्ट विथ द इंटरनेट वाइल फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल यू आर, मतलब जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, इसलिए क्योंकि वॉट एवर ड्राइवर्स आर नेसेसरी वो डायरेक्टली फैच करके इंस्टॉल कर देगा, अगर नहीं है तो आपको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आई वंस अगेन से प्रिफरेबली जब आप पहली बार अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो यू शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, सो ऑल द ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड रेडी। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, उसके बाद आपको क्या करना है, तो यू नीड टू गो इनटू टूल्स। तो टूल्स में जाके सबसे पहले अगर आपका मतलब आर्डिनो बॉर्ड डिटेक्ट हो गया है तो सबसे पहले आपको जाके उसका बॉर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ इट इज डिटेक्टेड एंड एवरीथिंग गोज वेल देन बाय डिफॉल्ट योर बॉर्ड विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर नहीं है तो फॉर द सेक ऑफ डबल सिक्योरिटी और वजह से अवॉइडिंग एनी कंफ्यूजन, आप एक बार जाके वो बॉर्ड सिलेक्ट कर ही दो, तो एटलीस्ट वो डिफरेंट बॉर्ड की एरर को नहीं आएगी। देन आफ्टर वो टूल्स के अंदर बॉर्ड के नीचे आप देख रहे हो सीरियल बॉर्ड, तो वो सीरियल बॉर्ड भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऑफकोर्स अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपके पीसी में या लैपटॉप पे प्रॉम्प्ट नहीं हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो इनटू डिवाइस मैनेजर। तो वहाँ पे आप पहले एक बार आर्डिनो अनप्लग करिए, फिर उसको वापस से कनेक्ट करिए, फिर उसको थोड़ा सेटल होने दे, जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल वापस से करेक्ट हो जाएंगे तो वो वहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आपको बता देगा कि कौन से कॉम पोर्ट पे आर्डिनो कनेक्टेड है और कौन सा आर्डिनो कनेक्टेड है। अगर सब कुछ सही आ रहा है तो इट विल शो कि आर्डिनो उनो ये कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है। दोज हु एक्चुअली स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग, सबसे पहली एरर वो यही करते हैं कि वो बॉर्ड सिलेक्ट नहीं करते और ना ही तो ना ही तो पॉट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल है वहाँ पे या ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट मतलब ये टूल या फिर बॉर्ड सिलेक्ट करने की बात कभी नहीं बताई जाती। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, एज आई सेड के फिर उसके बाद आपको कॉम्पोर्ट सिलेक्ट करना है, और कॉम्पोर्ट सिलेक्ट होने के बाद नाउ योर एंटायर सेटअप इज रेडी। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिंपल प्रोग्राम, और उसके बाद हमने दो बेसिक सिंपल एप्लीकेशन ही डिज़ाइन करनी है, तो उसके बारे में हैंड्स ऑन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज आई टोल्ड यू, जब मैंने आपको इसका प्रोग्रामिंग समझाया तो मैंने समझाया कि इसके अंदर तीन ही मेन पोर्शन होता है। एक है डिक्लेरेशन, फिर होता है सेटअप, और तीसरा होता है लूप। तो आप वॉइड सेटअप के ऊपर देख लो कि यहाँ पे हमने कांस्टेंट इंटीजर बनाया हुआ है और उसको नाम दिया हुआ है एलईडी की, और लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 30। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्डिनो बोर्ड उसके अंदर ऑन बोर्ड एलईडी जो है वो 13 नंबर की डिजिटल पिन के साथ कनेक्टेड है। सो नाउ इट इज इजियर टू यूज 30 नंबर ऑलवेज, इंस्टेड वो 30 नंबर को मैंने कांस्टेंट नेम भी दिया है एलईडी पिन। सो इन फ्यूचर रेफरेंस जब भी मैं मेरे प्रोग्रामिंग में जहाँ भी एलईडी पिन का यूज करूँगा, दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बेसिकली कॉलिंग दैट पर्टिकुलर डिजिटल पिन 13, आईओ पिन 13 की मैं बात करूँ। ठीक है, तो अब सेटअप के अंदर हम जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि सेटअप के अंदर आपको क्या दिखाना है, यू वांट टू लेट्स से यूज दिस एलईडी एज एन आउटपुट, मतलब 13 नंबर की पिन पे एक्सटर्नली एलईडी कनेक्टेड है, ऑन बोर्ड है बट एक्सटर्नली एलईडी कनेक्टेड है, तो आपको कुछ आउटपुट करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर एलईडी। ठीक है, तो उसको ग्लो करवाना है, उसको आउटपुट करवाना है, तो पिन नंबर 13 को क्या होगा, उसको आउटपुट की तरीके से हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो पिन मोड है दैट इज ऑल्सो अ प्री इंस्टॉल फंक्शन,
और यहाँ पे आपको सिर्फ ये भी याद रखना है कि पी मोड भी हमने पूरे स्पेसिफिक तरीके से लिखा है, एम कैपिटल है, ठीक है। और आप देख लोगे जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होते हैं। नाउ इफ वी गो इनटू और वी मूव फर्दर, यू से कि हमने लूप स्टार्ट करा है, तो लूप के अंदर मेरे को क्या करना है कि मेरे को एलईडी को स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन करना है और फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑफ करना है। तो जब ऑन करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसको हाई करना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ पे आउटपुट पे जाके हाई लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल लाइक जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत किया है दूसरे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, तो उनको पता होगा कि आपको हाई लो ऐसा नहीं लिखना होगा, आपको वहाँ पे कोई लेवल देना होगा। जबकि यहाँ पे आर्डिनो की खासियत ही ये है कि यू कैन मतलब जो विजुअली हम कनेक्ट कर सकते हैं उतना सिंपल प्रोग्रामिंग है। आपने क्या लिखा है, डिजिटल राइट, तो ये डिजिटल राइट क्या होगा, तो ये डिजिटल राइट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मतलब फंक्शन है, क्या करेंगे क्योंकि बेसिकली डिजिटल राइट अगर लिखा है तो उसके अंदर हम एक पिन नंबर लेंगे और पिन नंबर के उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो उसको हाई करना है या फिर डिजिटली लो करना है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 13 मैंने क्या 13 को नाम दिया एलईडी पिन, तो मैंने लिखा डिजिटल राइट एलईडी पिन सेमीकोलन। फिर मैंने जैसे आपको समझाने के लिए मैंने कमेंट दे दिया है कि यहाँ पे एलईडी क्या होगा, तब मेरा 13 ऑनवर्ड एलईडी ऑन होगा। फिर मैं अब जैसे कि मैं सिंपल लिखूँ अगर डिजिटल एलईडी हाई और लो, तो ये जो है लूपिंग बहुत फास्ट होगा, तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी इट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्टेन डिले दूंगा। तो डिले जब मैं दे रहा हूँ दैट डिले फंक्शन इज ऑलरेडी डेवलप बाय समबडी एल्स, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। और डिले के अंदर मैं जो भी लिखूंगा तो वो माइक्रो सेकेंड का मेरे को डिले देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिले 200, तो मतलब 2000 मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट आई वुड से 2 सेकंड। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया डिले 200, तो मैं 2 सेकंड का डिले दे दूंगा, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर वी टॉक अबाउट, फिर मैंने उसको हाई किया, फिर उस पिन को वापस से मैंने लो किया और फिर मैंने वापस से डिले किया। अगर मैं लास्ट में डिले नहीं किया तो क्या होता, तो वो वापस से ओवररन होके सीधी मेरे को एलईडी ऑलवेज ऑन ही होती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ऑन किया डिले दिया, ऑफ किया डिले दिया, ऑन किया डिले दिया, ऑफ किया डिले दिया। तो इफ वी गो बाय दैट क्रोनोलॉजी हम देखेंगे कि वो हमको थोड़ी लिंकिंग करती हुई दिखेगी और उसका जो टाइमिंग है वो मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू ट्राई एनीथिंग आप क्या कर सकते हो, तो वो डिले वगैरह चेंज करके देखो तो यू विल अंडरस्टैंड। और दूसरी एक चीज़ ये करके देखो, लो का हाई करके देखो, तो आप देखोगे कि उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो इनिशियली स्टेज पे जब आप रिसेट करोगे वहाँ पे वो फ़र्क दिखेगा, उसके बाद तो फिर इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। हाँ, आपको ये याद रखना है कि हाई करोगे तो एलईडी ऑन होगा, लो करोगे तो एलईडी ऑफ, ठीक है। और जब व्हेन यू राइट दिस प्रोग्राम एंड व्हेन यू डू दिस, तो आपको यहाँ पे ये 13 नंबर की एलईडी है वो ग्लो होती है। अगर आपके पास ये जेन्युइन ऊनो का बोर्ड होगा तो वो एलईडी शायद दूसरी कोई जगह पे यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब फिर मूविंग फर्दर थोड़ा बहुत हार्डवेयर का बेसिक ब्रेडबोर्ड का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ब्रेडबोर्ड यूज करोगे तो यू शुड मेक श्योर के यू अंडरस्टैंड द ब्रेडबोर्ड। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे कंपोनेंट है वो वर्टिकली शॉर्टेड होते हैं इस तरीके से, सॉरी इंटरनली। तो मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी पिन रखा तो वो नीचे वाले सारे के सारे पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना है, ठीक है। और वर्टिकली आप देख लोगे जो ये जो हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड स्टफ है वो किस तरीके से आपको यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपने यहाँ पे एक रेड लाइन वाले डॉट पे ऊपर वाले वर्टिकल एरिया में कहीं पे एक 5 वोल्ट का सप्लाई लगाया है, तो वो हॉरिजॉन्टली सारी की सारी पिन जो शॉर्टेड है वहाँ पे आप 5 वोल्ट कहीं से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली उसके नीचे आप ग्राउंड ले लो तो ग्राउंड भी कहीं पे निकाल सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप किसी को भी मतलब 5 वोल्ट या ग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि जो कंपोनेंट आप कनेक्ट करोगे वो कंपोनेंट आप स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत सिंपल से कनेक्शन देके रखा है। 10K का एक रजिस्टर अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट करूँ तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली तो हमारे शॉर्ट है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऊपर से। अब ये सारे सॉर्टेड कंपोनेंट के बीच में ये 10K देगा, लेकिन अगर मैंने सबको साथ में कनेक्ट करा है तो वो क्या देगा मेरे को 30K। 30K का कनेक्शन देख लो आप कहाँ से उठा के कहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल्सो। नाउ बाकी और भी एक मैंने देख के रखा है। हाँ, अब थोड़ा एक्चुअल हैंड्स ऑन पे आते हैं और हमको क्या करना है, जब भी हम दूसरा टास्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक एलडीआर का यूज़ करना है।
ठीक है, तो आई क्विकली कवर द व्हाट इज एलडीआर और फिर उसको उसका यूज करके सर्टेन टास्क को डील करवाना है। तो व्हाट वी बेसिकली वांट टू डू इज वी वांट टू कनेक्ट ए एलडीआर, मतलब एक एलडीआर एज एन सेंसर हम हमारे आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करवाने के बाद विल सेंस दैट पर्टिकुलर डेटा और बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन अगर वो मैच होती है तो हम एक्सटर्नल एलईडी को यहाँ पे लिंक करवाएंगे, नॉट दी ऑनबोर्ड एलईडी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं व्हाट इज एलडीआर। सो एलडीआर स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये फोटो रेजिस्टर है। तो फोटो की बात करते हैं, फोटो रेजिस्टर की, तो ऑफकोर्स ये लाइट से डिटेक्ट, लाइट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ये क्या करता है, तो फोटो रेजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट विच इज सेंसिटिव टू लाइट। जब भी उसके ऊपर लाइट फॉल होगी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और जब उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी तब हम वो चेंज रेजिस्टिविटी का यूज करके उससे कोई काम करवा के कोई ना कोई चीज़ें निकलवा लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने उसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है, तो कि क्या है, तो क्या फोटो रेजिस्टर जो इनिशियली होता है हाई रेजिस्टिविटी, जैसे उस पर लाइट फॉल होती है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, एंड व्हेन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज ऑफ कोर्स आपका क्या बोलता है उसकी वैल्यूज उसके अगेंस्ट की चेंज होने लगती है। तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है। ऑफकोर्स मैं इतना डीपली यहाँ पे एलडीआर भी नहीं समझा रहा, ऑलरेडी यू कैन गो इनटू द इंटरनेट एंड लुक इनटू दिस। तो हमको ये करवाना है यहाँ पे। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम दैट वी विश टू कनेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो कि हमको एक एक्सटर्नली 5 वोल्ट का सप्लाई देना है, उसके अगेंस्ट हमको एक फोटो रेजिस्टर कनेक्ट करना है। फिर वो फोटो रेजिस्टर को हमको उसके बाद एक 10 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, और 10 ओम के रेजिस्टर को हमको ग्राउंड करना है। तो यहाँ पे ये जो फोटो रेजिस्टर और 10 ओम का रेजिस्टर क्या कर रहे हैं, तो दैट इज यूज फॉर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। सर्टेन स्पेसिफिक स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर उसको यहाँ से 5 वोल्ट के अंदर से जो भी वेरिएशन आएगा वो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, तो फिर बिटवीन फोटो रेजिस्टर और एक्चुअल जो हमारा 10 के उनका रेजिस्टर है उसका, 10 के उनका रेजिस्टर मतलब ब्लैक ब्राउन ऑरेंज आप देख लेना वहाँ पे। फिर मैं किसी पिन के साथ एक एलईडी कनेक्ट करूंगा, फिर वो एलईडी का दूसरा एंड जो है थ्रू रेजिस्टर में ग्राउंड करूंगा। और जिनको ये नहीं पता कि एनोड कैथोड एलईडी में कैसे लेके जाते हैं, तो डिफेक्ट को स्टैंडर्ड ये बोल रहा है कि एलईडी का जो लॉन्गर लेग है जनरली दैट इज योर व्हाट आई कैन से एनोड। ठीक है, और अगर अब दोनों लेग सेम ही कट हो गए तो यू लुक इनटू एलईडी, आपको पता चलेगा एक साइड का पोर्शन थोड़ा बड़ा होगा अंदर से और दूसरे साइड का छोटा होगा, तो दैट लार्जर पोर्शन इज नथिंग बट योर कैथोड, और जो स्मॉलर पोर्शन इज नथिंग बट योर एनोड। ठीक है, तो वंस अगेन आई रिमेंबर रिकॉल, मतलब बता रहा हूँ कि एलईडी के अंदर देखो जो लार्जर पोर्शन होता है दोनों के बीच में गैप होगा फोटोन ट्रांसमिट करने का, तो जो लार्जर पोर्शन है वो कैथोड है, जो स्मॉलर पोर्शन है वो एनोड है। तो उसी ऑर्डर में आपको कनेक्ट करना होगा। इफ यू डोंट कनेक्ट इट तो वैसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट यू विल सिंपली बर्न योर एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ये टाइप का कोई सर्किट बनाना होगा। ओके, ये टाइप का कोई सर्किट बनाना होगा। तो ये सर्किट के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू समथिंग, मतलब आप थोड़ा हम आगे चलते हैं इसको, ऐड नहीं हो रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट। Just give me 1 second. I'm actually arranging the camera so that we can see. Okay, so yeah, that should work. Yeah, तो अभी शायद आ जाए। I think straight. ओके, तो अभी मैं
Okay. Okay. Hello. 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 Okay. So sorry for that technical delay. Okay. So someone is saying that now they can hear me, right? Okay. So meanwhile, what you can do, let's make sure that just one second. Mm, So people are saying now it's working, right? So I'll again wait for only 1 or 2 minutes just to give time so that this uh, setup gets settled down. Meanwhile, those who were present, uh, I have provided a link मतलब चैट बॉक्स के अंदर तो वो जो चैट बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है यू गो over there and students can provide an online attendance. So while this entire setup gets settled, we wait for 30 seconds or so, so we can um, make use of that time. So just go down into comment section. You should see a form. आप वो submit कर दो. Okay. So I'll give you 30 seconds or so. I'll wait for that time. Meanwhile, आप उसको submit कर दो. So at least form is visible, right? या वो कमेंट सेक्शन पे जाके आपको निकालना पड़ेगा. So once you all complete that particular attendance come back, so at least I get to know the attendance. Go to comment section. एक बार हो जाए तो फिर चैट बॉक्स में आके वापस से यस यस लिखना स्टार्ट करो. So I understand that everybody is back, so we can start from there. Okay, so I see few of the answers. मतलब तो हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. So right now, okay. So, okay. Fine. No need to reply. So, okay. So let's get back to our original stuff. As I was saying, sorry for that technical delay. What actually I have done it over here, that based on circuit मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने एक LDR कनेक्ट करा है. वो LDR के साथ मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट करा है and that resistor is again grounded over here. अभी मैंने ग्राउंड नहीं करा है. फिर यहाँ पे मैंने एक एलईडी कनेक्ट करी है फ्रॉम दैन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके नीचे मैंने एक रेजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है. फिर वो रेजिस्टर और यहाँ पे ये दूसरा वाला रेजिस्टर, ये दोनों लेग को मैंने ये वाइट वायर जो है उससे शॉर्ट कर दिया है. नाउ सो फ्रॉम दैट शॉर्टिंग मैंने यहाँ से एक ब्लैक वायर निकाल के रखा है. दैट ब्लैक वायर आई एम कनेक्टिंग टू दिस ऑन बोर्ड ग्राउंड. ठीक है. और वो जो व्हाइट वायर है मतलब एलडीआर को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल 5 वोल्ट. तो वो मैं ऑन बोर्ड जो आर्डिनो है वहीं से 5 वोल्ट निकाल रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने इसके ऊपर डाल के रखा है 5 वोल्ट. और जो एलडीआर का इनपुट है वो जैसे कि मैंने बताया कि वो एनालॉग होगा. Okay. So now I think I'm getting why the audio was muted.
बिकॉज जब मेरा खुद का स्क्रीन मतलब वहाँ से बाहर निकल जाता है तो ऑडियो गेट्स म्यूटेड, ठीक है। तो ओके, नाउ दिस इज एन एज आई वाज सेइंग कि इसका आउटपुट जो है वो एनालॉग होगा, तो वो मैं A0 से रीड करूँगा, राइट। नाउ मतलब हमारा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट है और मैं इसके साथ सिर्फ मेरा अब मुझे कनेक्ट करना है यहाँ पे सिर्फ मेरा यूएसबी, जो यूएसबी ऑलरेडी मेरे साथ मतलब यहाँ पे कनेक्टेड है। नाउ आई एम शेयरिंग माय एप्लीकेशन विंडो, फिर उसके बाद एक मिनट, आई थिंक कौन सा है, इज इट द सेम कोड, या तो वही है, राइट। सो उसके अंदर मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे, तो मैंने A0, जहाँ पे A0 मतलब दिस पर्टिकुलर पिन जहाँ पे मैं रीड करने वाला हूँ मेरा A0 से, मतलब एनालॉग इनपुट जो मेरे को रीड करना है उसको मैंने एक नाम दिया है एंड आई हैव कॉल्ड इट सेंसर पिन। फिर सेंसर पिन के साथ मैंने एक वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल नेम देके रखा है जिसको मैंने बोला है सेंसर वैल्यू। सो और फिर मतलब अभी के लिए तो सिर्फ यही दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करे हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट डिक्लेरेशन इज अबाउट द सेटअप। फिर सेटअप के अंदर मैंने लिखा है सीरियल बिगिन। तो अब ये सीरियल बिगिन 9600 जो है वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज जो यहाँ से इनपुट रीड वैल्यू है, दैट इनपुट रीड वैल्यू आई शुड बी एबल टू सी ऑन माई व्हाट आई कैन से मेरा जो सीरियल मॉनिटर है जो अवेलेबल है यहाँ पे कॉर्नर पे, मैं उसके ऊपर से उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने पिन मोड 13 को आउटपुट के साथ कनेक्ट करा है और लूप के अंदर सिर्फ लिखा है कि जो भी वैल्यू मैं रीड करने वाला हूँ सेंसर वैल्यू A0 से, जो कि A0 का मैंने सेंसर वैल्यू बोला है, वो सिंपल मैं रीड करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इफ द सेंसर वैल्यू इज ग्रेटर देन 800, तो मेरी 13 नंबर की एलईडी ऑन होगी, अगर नहीं है तो 13 नंबर का एलईडी ऑफ होगा, ठीक है। मतलब तो उस केस के अंदर मेरे को ये एलईडी लो करनी रहेगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग तो इट्स फाइन। अभी मैंने यहाँ पे आर्डिनो कनेक्ट करने के बाद सीधा वेरीफाई नहीं किया है, मैंने सीधा अपलोड किया है। पहले स्केच वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद ही वो अपलोड होगा। अब जैसे कि ये सीधा अपलोड हो गया है तो नीचे यहाँ पे मतलब डन अपलोडिंग का मैसेज आ जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। फॉर द फर्स्ट जब आप कनेक्ट करोगे तो इट टेक्स सम टाइम। मैंने भी सेम गलती करी है, लेट्स सी इट इज ऑन कॉम्फर्ट, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप उसको कनेक्ट करते हो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो दैट इट हैज एनी इशू, राइट। तो अभी यहाँ पे 800 से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, बट वो वैल्यू कनेक्ट नहीं हो रही। वाई इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि अच्छी तरीके से इसके अंदर डाला नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो एलईडी है, आई होप यू कैन सी, और थोड़ा बहुत ये, तो वो एलईडी ग्लो हो रहा है और जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ तो वैल्यू जो है वो 700 के नीचे जा रही है। तो जैसे कि हमने कोड में ऐसा लिख के रखा था कि अगर वैल्यू 700 के नीचे जाएगा तो हमारा एलईडी बंद हो जाएगा। तो आप ऑन बोर्ड एलईडी भी देख सकते हो यहाँ पे, एक जो थर्ड लाइन, और जो इसके साथ एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट है वो भी। और जैसे ही वैल्यू जाएगा मेरा 800 के अबाउ इन दिस केस, तो मेरी एलईडी लो हो जाएगी। तो वन सेकेंड थोड़ा रिवाइज कर लो कि क्या हो रहा है। हमने एलडीआर कनेक्ट किया, एलडीआर के साथ रजिस्टर कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे एलईडी कनेक्ट किया, एलईडी के नीचे हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया, ये दोनों को हमने सॉल्व करके रखा है। ये जो एलईडी है उसका एक्सटर्नल सप्लाई में दे रहा हूँ, मतलब एलईडी को जो सप्लाई दे रहा हूँ वो मतलब 13 नंबर के पिन के साथ मैंने कनेक्ट करके रखी है, ठीक है। और जो 5 वोल्ट है और जो ग्राउंड है वो मैंने ऑन बोर्ड सप्लाई से ही यहाँ पे निकाल के रखी है, राइट। सो सीरियल मॉनिटर दिख रहा है सबको, तो आई होप दैट इज ओके।
किस तरीके से हमने यहाँ पे काम करवाया। जिस चैट के अंदर आप रिप्लाई देना है। लेट मी सी अगर ओके तो जस्ट टू एप्लीकेशन विंडो के अंदर ये मेरा कॉम्पोर्ट है। कॉम्पोर्ट को अलग से मेरे को शेयर करना पड़ेगा। मतलब कॉम्पोर्ट के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू शायद आपको दिख रही होगी। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी डिले नहीं दिया है, तो हर बार 800 के अबव की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही होगी। तो मेरी ये एलईडी लो हो रही है। जब मैंने इसको 800 के नीचे डाल दिया तो आप देख रहे हो कि ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। आई थिंक it should be visible. ठीक है। I think मेरे को नेक्स्ट टाइम रेड एलईडी कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक दैट इज इट। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने टू फाइंड इवन दिस सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस डिफिकल्ट। तो उसके लिए एक अच्छी बात है कि आप इस तरीके के सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो व्हेन यू कनेक्ट सॉर्ट ऑफ सेंसर्स तो आपको दूसरी ज़्यादा चीज़ों की कोई ऐसे मतलब केयर नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे वीसीसी कनेक्ट करना है, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करना है और एक A0 का जो सप्लाई है वो सीधा यहाँ पे देना है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक एप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्या हुआ? let us discuss some other application. So for that other application मेरे को क्या करना है, तो वो other application के लिए मैं एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करने वाला हूँ। एक हमारे क्या बोलते हैं पुश बटन को कनेक्ट करने वाला हूँ। एंड वी काइंड ऑफ वांट टू मेक एन एप्लीकेशन जहाँ पे हमने हर किसी ने रिवर्स पार्किंग वगैरह तो देख के रखा है, तो उसको कनेक्ट करने वाला है। ओके, so meanwhile just wait for some time जब तक ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली माय लैपटॉप हैज़ हैंग इटसेल्फ, मतलब उसको पता नहीं क्या हो गया, वो पूरा हैंग हो गया। सो आई एम वेटिंग टिल इट गेट्स सेटल्ड। ओके, नॉट एन इशू। इट्स टेकिंग सम टाइम। बहुत सारे एप्लीकेशन पैरेलल में यहाँ पे रन हो रही है। एक स्ट्रीमिंग वीडियो चालू है और ऊपर से ये सारे आर्डिनो वगैरह भी चालू है। तो लॉन्गर देना। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमको डिज़ाइन करना है उसके लिए हमको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग लेटर ऑन वंस दिस एंटायर सिस्टम गेट्स सेटल्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना है, विल कनेक्ट दिस अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो हम क्या करेंगे, ये सेंसर कनेक्ट करने के बाद उसका थोड़ा डिस्टेंस निकालेंगे। फिर वो डिस्टेंस जब निकालोगे, फिर डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दैट विल व्हाट आई कैन से मेक एन अरेंजमेंट कि जहाँ पे जब मैं ये स्विच प्रेस करूँगा उसके बाद ही ओनली आफ्टर देन दिस एंटायर सिस्टम with what I can say ultrasonic sensor and my buzzer will get activated। तो मतलब आप देखते हो कि जब भी आप अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हो, whenever you do that only then your parking sensors gets activated, till then they are in ideal state। ठीक है। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी रेप्लिकेट करने की बात कर रहा हूँ। एंड दैट पुटिंग योर कार इनटू द रिवर्स गियर विल बी seen using or rather say will be understood using pressing this particular switch। ठीक है। So I think it has started and it is taking longer than we expected। Okay, so okay,
Now let's quickly move to our last application. This is the last application. From then after we'll stop. Okay. Uh, ओके, सो ये वही प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है. नाम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल क्योंकि वी ऑलरेडी हैव सम सॉर्ट ऑफ डिले. ठीक है, अब क्विकली हम चलते हैं. पुश स्विच, अल्ट्रासोनिक सेंसर और बजर, इनकी जो तीन चीज़ों का यूज़ करके हमको एक सेटअप वगैरह यहाँ पे करना है. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर हम देख लेते हैं थोड़ा पुश स्विच के बारे में. ठीक है. ओके, सो पुश स्विच में ऐसा कुछ है नहीं. मतलब ओनली यू रिक्वायर्ड इज दैट wherever you push that switch to down, only then these two point A and B are connected. For the rest of the time they are open. अब यहाँ पे देख लेते हैं एक सर्किट कनेक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. ये सर्किट कनेक्शन मैंने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है इस तरीके से किया है. ओके, राइट हैंड साइड पे इस तरीके से दिया हुआ है. तो क्विकली थोड़ा वाइंड अप करने की ट्राई करते हैं. तो पिन के साथ देखो एक्सटर्नली मैंने एक 5 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो. मैंने यहाँ से निकाला हुआ है सप्लाई 5 वोल्ट के साथ. उसके साथ मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट करा है और वो जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर मैंने पुश स्विच के साथ ग्राउंड करा है. और जैसे ही मैंने पुश स्विच के साथ उसको ग्राउंड करा है तो उसके बाद क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जब मैंने पुश स्विच प्रेस नहीं करा होता है तो यहाँ से जो मैं आउटपुट ये स्विच का लेवल का ले रहा हूँ तो उस ड्यूरेशन के अंदर आउटपुट के अंदर मेरे को 5 वोल्ट आएगा. और जैसे ही मैं ये स्विच प्रेस करूंगा तब मेरा स्विच जो है वो ग्राउंडेड हो जाएगा. तो ग्राउंडेड होने के कारण यहाँ आउटपुट पे लो आएगा. सो एज लॉन्ग एज आई एम प्रेसिंग दिस पर्टिकुलर बटन I'll get the what I can say low values. When I release that particular button, I'll get the what I would say high values. तो क्विकली अब मैं उसको मतलब बाकी के सेटअप से मेरे आर्डिनो को निकाल रहा हूँ. उसका कनेक्शन भी हमको आगे करना है. फिर थोड़ा बहुत देख लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर. तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का थोड़ा बेसिक क्विकली हम कवर कर लेते हैं. ज़्यादा तो टाइम नहीं बचा, डीप में नहीं जा सकते हम. तो उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है. जब भी ट्रांसमीटर को कोई सिग्नल भेजना होता है तो वो ट्रांसमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली. और जो रिसीवर है उसके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा ओनली देन यू वुड से दैट के वहाँ से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो वहाँ से इको बैक होगा. ठीक है. फिर अब जो ट्रिगरिंग सिग्नल है वो दैट वुड बी ऑफ 10 माइक्रोसेकंड और उसको एक साइकिल के बर्स्ट के अंदर दिया जाएगा. सो व्हेनेवर इट एक्वायर्स समथिंग और व्हेनेवर इट एनकाउंटर्स समथिंग सो वो रिपल बैक वहाँ से होगा. तो इस तरीके का एक कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है मैंने. ठीक है. और हाँ, एक बात समझ लो. देखो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन जो होगी वो कैलकुलेशन मैं आपको बताना भूल गया. वो चीज़ ऐसी है कि देखो हमारे पास वेलोसिटी की जब बात करते हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम. तो हमारे पास टाइम यहाँ पे जो है जो कि साउंड वेव है तो साउंड वेव की वैल्यू हमारे पास पता है. सो ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का और जो रिसीव हो रहा है वो सिग्नल का हम टाइम निकाल सकते हैं. तो उसका हाफ दैट विल बी आवर डिस्टेंस. तो वो भी मैं अभी डीप के अंदर नहीं जा रहा हूँ. आप थोड़ा बहुत नेट के अंदर सर्च करोगे तो यू माइट बी एबल टू सी लॉट मेनी एग्जांपल्स. तो सीधा जो मैंने सर्किट कनेक्ट करा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है. सो पहले क्या होगा कि व्हील ट्राई टू मिमिक कि जैसे कि अगर हमने रिवर्स गियर के अंदर गाड़ी डाली तो वो मैं कैसे मिमिक करूँगा. तो फिर मैं मेरा ये बटन जो है उसको प्रेस करके रखूँगा. जैसे ही मैंने बटन को प्रेस करके रखा है वो तो मेरा ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा. फिर मेरा बजर भी अगर स्पेसिफिक डिस्टेंस से कम हो गया तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है. तो अब मैं इसका जो प्रोग्राम है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते इतना अभी यहाँ पे, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो मैं पूरा का पूरा वो प्रोग्राम भी यहाँ पे अभी समझाने वाला नहीं है. ठीक है. वो प्रोग्राम अगर आपको चाहिए तो यू सिंपली मेल मी, आई प्रोवाइड यू द प्रोग्राम. वैसे इसके अंदर कोई इतनी नई बात नहीं है. आई एम कनेक्टिंग 5 वोल्ट
देन आई एम कनेक्टिंग ग्राउंड एज वेल। ठीक है, फिर मेरे को जो पुश स्विच है, पुश स्विच मैंने बटन को 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, और फिर मेरे को ना ये अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैंने जैसे भी आपको बताया, मेरे को वो ट्रिगर इम्पल्स देना होगा ऑफ सर्टेन सेकंड। तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता के रखा है, बट कभी बीच में ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच टाइम ज़्यादा निकल गया तो मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो ट्रिगरिंग को मैंने कनेक्ट करके रखा है पिन नंबर 3 के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो मैंने जो मेरा प्रोग्राम बना के रखा था, वो प्रोग्राम के अंदर ही मैंने सारा का सारा ये कमेंट डाल दिया था। ठीक है, तो लेट अस जस्ट गो इनटू दैट। मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है। लेट अस जस्ट सी एप्लीकेशन विंडो में जो स्केच ओपन है। तो जैसे ही आप देख लो प्रोग्राम के ऊपर मैंने सारे के सारे नंबर्स लिख के रखे हैं, तो उसकी वजह से मैं आराम से ये कनेक्ट कर सकता हूँ इको को। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ना, ये थोड़ी धीरज का काम है। तो शायद अगर मैंने प्रोबेबली ये कनेक्ट करते वक्त जल्दी में कनेक्ट किया, कहीं से किसी वायर या कनेक्शन को हिला दिया, तो माइट बी पॉसिबल कि इतना प्रॉपरली वर्क ना भी करेगा। लेट्स होप सो ये करेगा। अब मैं कर रहा हूँ इसको सीधा अपलोड। देखो जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा, फर्स्ट थिंग दैट इट विल डू, इट विल वेरीफाई दी एंटायर प्रोग्राम। अगर वो प्रोग्राम पूरा का पूरा सही तरीके से लिखा है, तभी वो आगे जाएगा। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस का यूज़ किया है, जैसे टोन फंक्शंस जो अवेलेबल है उसका मैंने यूज़ किया है। डिस्टेंस और ड्यूरेशन को, मतलब इको पिन से पल्स इन फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और मैंने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाने के लिए सीरियल प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ किया है। तो सीरियल प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, तो हमारा सीरियल मॉनिटर जो है, हमने आज जैसे कि आगे देखा, वहाँ पे वो प्रिंट करेगा सर्टेन वैल्यू। ठीक है, और वो सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटअप के अंदर सीरियल बिगिन 9600 टाइम एंड अगेन आपको लिखना रहेगा। आई थिंक हैज इट कनेक्टेड, लेट मी जस्ट सी। ओके, नो इट इज स्टिल कंपाइलिंग। सो एज आई सेड अर्लियर, फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप वापस से प्रोग्राम लोड करना चाहोगे तो इट विल टेक सम टाइम। वो कंपाइल करने के बाद उसको अपलोडिंग भी करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यही प्रोग्राम के अंदर कुछ भी चेंजेस करूँगा, और चेंजेस करने के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा, तो वो क्विकली ऐसे फटाक से अपलोड हो जाएगा। बट राइट नाउ इट विल टेक सम टाइम। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एप्लीकेशन पैरेलली मेरे पीसी पे लैपटॉप पे चल रही है, सो दैट अगेन लोअर्स द परफॉर्मेंस अ लिटिल बिट। तो उसका भी थोड़ा बहुत असर यहाँ पे पड़ेगा। So I'm waiting once it is compiling, we'll test it. Uh, this is the final application. Once we test it, then we'll stop it. उसके बाद we now it is compiling. Yeah, so it has the message prompted. Okay, so once again मेरे को यहाँ पे दिखाना है आपको हमारा सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो वो जो सीरियल मॉनिटर है, राइट नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग द डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो यहाँ से वॉल का है। अब वो मैं पूरे वॉल के बीच में मेरा हाथ रख रहा हूँ, तो मेरा हाथ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। जैसे जैसे मैं इसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ला रहा हूँ, तो यू कैन सी कि जो वेरिएशन है डिस्टेंस के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे कि मैं आपको प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊँ, तो प्रोग्राम के अंदर मैंने ऐसा बना के रखा है कि अगर 20 सेंटीमीटर से अंदर कोई भी चीज़ आएगी, तो ये मेरा जो बजर है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इवन इफ इट राइट नाउ इट इज इन लेट्स से प्रॉक्सिमिटी ऑफ अराउंड 7 और 8 सेंटीमीटर, द बजर इज नॉट टर्न ऑन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कि मैंने ये पुश स्विच बता के रखा है। अब जैसे कि मैं आगे देख रहा हूँ, नाउ आई कैन सी कि मैं धीरे धीरे मेरा हाथ जो है मेरे अल्ट्रासोनिक सेंसर के नज़दीक ला रहा हूँ। नाउ वंस इट विल बीट बिलो 20, मेरा बजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो रिवर्स के अंदर मान लो, हाँ, तो मतलब वो एक्टिवेट हो गया। और इवन इफ मैंने ये पुश स्विच करके रखा है, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, 110-12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है सामने की वॉल का, तो कोई इश्यू नहीं है।
फिर यहाँ पे 60-50 सेंटीमीटर तक मेरा हाथ है तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे ये 20 सेंटीमीटर से कम का हो गया, now it will start giving me tone as well as the option। ठीक है, so that is how you can decide an application। अब यहाँ पे there are not many application that we can discuss to be honest। अभी तो ये पहला है तो I try to cover कि मैं basics ही इसके अंदर थोड़े cover करूँ। But in the future installment we'll talk more about what I would say um, application rather than the theoretical aspect। ठीक है, तो अभी तो ऐसे ही यहाँ से आगे चलते हैं। लेट्स सी इफ एनी कंटेंट इज रिमेनिंग। तो कहीं नहीं है, यू कैन थिंक अबाउट एप्लीकेशन। सिंपल देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई आपको सिखाए तो ही आप सीखोगे, ऐसा नहीं है। यू जस्ट सिंपली परचेज ऑल दिस मटेरियल विच इज रेडीली अवेलेबल एंड दिस मटेरियल्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट अवर SSIP सेंटर। मतलब इसी डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो SSIP लैब है वहाँ पे भी ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। डिज़ाइन लैब है, वहाँ पे भी ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। सो व्हेनेवर आफ्टर लेट्स से समटाइम व्हेन यू एंटर द कॉलेज, आप वहाँ से ये सारी चीज़ें निकालो एंड देन यू स्टार्ट टिंकरिंग। मतलब जो टिंकरिंग लैब हमारे पास है वहाँ पे ये सारे के सारे मटेरियल अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट आर्डिनो और उसका बेसिक्स, जहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी की सारी चीज़ें और एक बहुत सारा मटेरियल मेरे ये पर्टिकुलर ब्लॉग पे अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू हैव एनी if you want if you have any query you can write to me और वहाँ पे नीचे डाल देना ब्लॉग के अंदर कमेंट वगैरह। मैं टाइम में देखता रहता हूँ तो आई माइट रिप्लाई यू। और यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम अवेलेबल इन इसी डिपार्टमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन इवन मीट मी। तो आई थिंक दैट शुड इट। अभी इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, दैट शुड बी। If you have any query तो आप comment section के अंदर डाल सकते हो। So मैं वहाँ से देख के जो comments वगैरह है I will try to answer it। मेहता सर इज सेइंग थैंक्स अ लॉट इन सर। ओके, थैंक यू। हाँ, और मटेरियल के लिए मुझे समीर सर ने भी थोड़ा हेल्प करा है एंड देन हेमंत पंड्या सर जी, उन्होंने भी ये जो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं तो उसका भी टेक करके रखा है। सो आई एम थैंकफुल टू दोस टू पीपल आल्सो एंड आल्सो very much thank you to Professor H.D. Mehta sir for providing me information to deliver this lecture and hope that in future installment हम इससे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ करवा पाएंगे। I think आज के लिए तो इतना ही है। And if you have any query, you can comment in the chat box. I'll try to answer it. And I'll wait for 2 or 3 minutes. If anyone has any query, I'll try to answer it and then we'll stop. Can you upload the difference between Arduino and Raspberry Pi? Actually अब बोलते हैं ना तो Arduino तो बहुत basic है, Raspberry Pi is much more advanced printed circuit board। उसके लिए Raspberry Pi जब आपको यूज़ करना है तो you need to have some sort of knowledge of shell scripting वगैरह का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना है कि मेमोरी कार्ड के साथ लूप्स की मदद से आपको पूरा का पूरा ओएस वहाँ पे टर्न करना है। तो आर्डिनो के साथ आपको कोई भी चीज़ काम करनी है तो फिर आपको व्हाट आई कैन से पीसी या फिर एक लैपटॉप वगैरह चाहिए होगा, या तो फिर अभी तो मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट आप प्रेफरेबली आपको पीसी या लैपटॉप चाहिए होगा। क्योंकि रास्पबेरी पाई का कैसा है कि उसके साथ आप मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर दो, ओएस बंद कर दो, तो दैट विल एक्ट एज एन सिंगल हैंड कंप्यूटर। ठीक है, तो दैट इज मतलब थोड़े एडवांस लेवल के बोर्ड होते हैं। लीगल बोर्ड एक अलग दूसरा बोर्ड है जो रास्पबेरी पाई जैसा ही है, लेकिन वो रास्पबेरी पाई से भी अच्छे वीडियो क्लैरिटी आपको दे सकता है। इफ यू कनेक्ट एनी बोर्ड समथिंग, सॉरी डिस्प्ले अगर आप कनेक्ट करते हो। इफ यू हैव एनी अदर पीपल, इफ दे हैव एनी क्वेरी,
एंड सॉरी फॉर द टाइमिंग, मतलब एक्सपेक्टेड टाइमिंग से थोड़ा ज़्यादा निकल गया because of certain technical glitches. In the future, the installment will make sure that we do not encounter such difficulties. So if you have any query, अगर नहीं है तो मतलब मैंने एक टाइमिंग यूआरएल दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वो यूआरएल का स्नैपशॉट ले लो, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। So you had two question. I hope that I was able to answer it. That's very fine. हाँ वो we'll cover that also. When will be next webinar on Arduino? तो अभी के लिए we are planning probably will have it in next month onwards. तो एक जो वेबिनार होगा वहाँ पे अभी तो आपके पास हार्डवेयर वगैरह है नहीं, तो क्या आप सिमुलेशन से ये चीज़ें कर पा सकते हो? Yes, you can do it. And I think some faculty from the Hemant sir will conduct that particular portion. अगर वो हो रहा है तो then after, how do I get the notification? You will be informed with the same manner जब आपको यहाँ पे जो inform करा था वही same channel से आपको information मिल जाएगा, notify होगा। Okay, if anyone has any query, okay. And then after we'll cover Raspberry Pi and probably legal on board. फिर STM controller भी है, and for electrical guy we can go with power electronic also. Even CBIT, for CBIT people we can go with IoT applications also, but it will take time. So I think that should be. Uh, okay, final call. If anyone has any query, you can uh, write down in the below chat box. If not, then I assume that every query is answered, right? Okay, so that should do. Thank you very much. Right? If you have any query, then as I told you, you can reach to me via this email ID I am providing you. So snapshot ले लो, वो email ID पे आप लिख देना. I'll try to answer it. Okay. So that should do. Okay. Thank you very much, everyone. Okay.